Good morning, everyone. Good morning, sir. Very Good morning, and sir. Merry Christmas to all of you. Thank you, sir. Same to you. Same to you, sir. There is a gift for you. Keep your pen and paper. Keep your pen and paper ready. All of you. Do you have your pen and paper handy? Yes, sir. Okay. Do one thing. Write one question. So you have to answer this question. It's a short essay. A lot of surprise tests will keep coming like this. So the question is, okay. Can you see this? Can you read the question clearly? Yes, sir. So you have 10 minutes to answer this question. Be very honest. And your time starts now. Write this question in the next. Let me briefly explain to you what is the requirement so that you have an idea. So the question is assess the evolving geopolitical dynamics and the security situation. You know what is happening in Israel, Hamas. Okay. You try to build how it is going to impact the global geopolitical situation, the security concerns. Try to explore whatever you can. This should be written in like 150 to 200 words, and also briefly discuss about how it is going to impact India and India's strategic posturing with respect to its global dynamics. So you have 10 minutes to write this question. Right now the time is 11:11, so I'll give you time till 11:22, one grace minute. So your time starts now. मिल जाएंगी? जी सर. Okay. So let's start. Put your phones on mute. We're starting today's class. We are doing March current affairs for those who have joined today. So in the previous lecture, we were discussing about India ka renewable energy targets kya the. We discussed about that. Initially, jab COP21 in Paris, there we kind of promised that we would 175 gigawatt ka hum produce karenge renewable energy by 2022. And we have missed out on the target. Thoda sa 119 ke around shayad we have been able to produce from renewable energy. And particularly हमने डिस्कस किया था कि जो सोलर रूफटॉप है जिसका टारगेट हमने रखा था 40 गीगावाट का, तो उसमें से सिर्फ हम 7.4 गीगावाट ही प्रोड्यूस कर पाए हैं थ्रू रूफटॉप. एंड सिमिलरली फॉर विंड एनर्जी का हमारा जो टारगेट था दैट वाज 60 गीगावाट, तो हमने कितना प्रोड्यूस किया? 41.9. सो वी आर slightly short of the targets that we set, and now we have revised our targets 2030 500 gigawatts. So like that. And water, is a state subject, and electricity is a concurrent list subject. Now today's first topic is National Security Act 1980. Okay? NSA, National Security Act, empowers the state to detain a person without formal charge. ठीक है? कि किसी बंदे को विदाउट चार्ज डिटेन कर सकती है अगर स्टेट को लगता है कि दिस पर्सन is detrimental to the law and order. He can incite mob violence, he can incite certain terrorist activities. So like that, the state is empowered. आपका एक UAPA भी है, Unlawful Activities Prevention Act. So these are the acts that give state absolute power in
arresting anyone or framing national security clause against them. So under this act, what happens? Person is taken into custody to prevent them from acting in a manner prejudicial to the security of the state. ये order pass कौन करता है? Divisional commissioner or the district magistrate. For example, the head of the district, he is the district magistrate. Or for example, if you talk about a state, there are certain divisions. State is divided into a few divisions consisting of several districts. So the head of that head of that division, pardon my throat, yeah, the head of that division is called the divisional commissioner, and he is also empowered to pass this order under National Security Act. ठीक है? Even if a person is in custody, ये भी ध्यान रखें, अगर custody में है, तब भी NSA slap किया जा सकता है उसके against. So not necessarily someone who is outside the jail, the person inside the jail also for some other crime, NSA उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है. ठीक है? Or if a person has been granted bail also, उस case में भी they can be immediately detained under NSA. The person has been acquitted by court तब भी. तो ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं कि NSA के बाद ब्लैंकेट पावर्स आ जाती है. Under the National Security Act, the state gets absolute powers to detain a certain person if it is presumed or it has come to light due to certain reports, certain intel, that he can be prejudicial to the interests of the state. The law takes away individuals' constitutional right. So fundamental rights, आपको पता है, it guarantees freedom of expression, freedom of movement, all these articles 12 to 35 उसमें different fundamental rights है. तो NSA उस बंदे के fundamental rights को it takes it away. ठीक है? जैसे DK बासु गाइडलाइंस है आपकी, DK बासु गाइडलाइंस, उसके अंदर क्या है कि बंदे को, जो अरेस्टेड पर्सन है, 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है. तो वो भी राइट इसका चला गया, बिकॉज NSA में एब्सोल्यूट पावर आ गई स्टेट के पास, तो ये भी उसका राइट चला गया. ठीक. द डिटेन पर्सन ऑल्सो डज नॉट हैव द राइट टू मूव अ बेल एप्लीकेशन. तो बेल एप्लीकेशन भी मूव नहीं कर सकता वो, ये भी ध्यान रखो. नेक्स्ट आ गया वन क्रूशियल सेफगार्ड. एक सेफगार्ड जो है अंडर NSA इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 22(5), राइट अगेंस्ट डिटेंशन है ना, इलीगल डिटेंशन, where all the detained persons have the right to make an effective representation before an advisory board, which consists of 3 members. The board is chaired by a member who is or has been a judge of the High Court. तो सिर्फ एक प्रोटेक्शन है NSA के अंदर डिटेन हुए बंदे के लिए, कि वो एक एडवाइजरी बोर्ड जो बनाया होता है फॉर द रिव्यूइंग सच पिटिशंस, 3 मेंबर बोर्ड होता है, तो उसके इट कैन मेक इट्स रिप्रेजेंटेशन वहां पे. ठीक है? तो हेड कौन करता है? Judge of a High Court, current judge, incumbent, or maybe some retired judge as well. Okay? All right. Next we have. Excuse me, sir. Yeah, please. Sir, I have a doubt regarding this. Sir, actually, I want to ask under what circumstances that state can invoke this National Security Act, and There how is this no- decision. There is no specified. See, that is what it is. It has given blanket powers to the state. It is this also cannot be challenged also, because this certain intel reports will be there, certain things which are not made public. That is classified information. So that is Okay. based on those. For example, some militant activity is supposed to occur through. We come to know through our reports, certain investigative reports, certain intel reports. So they will be communicated to the Home Ministry, and then accordingly, based on the report as well as the ground survey, certain actions are taken. But this is never made public. The reports are never made public. This is classified information, top secret. Sir, are there any checks and balances kind of thing to prevent the misuse of this act, sir? ऐसा कुछ इसमें कुछ नहीं है, इसमें नहीं है दादा. आपको बता दिया ना 22(5)(a) की प्रोटेक्शन इनके लिए ना. Okay, sir. Priyanshu, we can do one thing. मतलब after half an hour we'll stop for questions, so you can note the questions. Okay, sir. Yeah. Yes. थोड़ा जी सा sir, वो जी बेटर हम आगे से वो करें. ठीक है? जी Okay. sir. Wonderful. Next is देखिए Supreme Court reservation to the converted. अब जो people who convert their religions, उसके केस में क्या है? So the Kerala High Court declared the election of a legislator, A. Raja, as null and void, holding that a baptized Christian, he is ineligible to contest from a seat reserved for members of the scheduled caste. ठीक है? तो A. Raja, being a Hindu, he converted to Christianity,
and since he had won on a reserved seat for scheduled caste, so his membership became null and void. ठीक है, तो ये एक आपको issue है कि Christians they do not enjoy the right of scheduled caste reservation. ठीक है, अब issue of reservation with respect to Muslims and Muslims, Christians and Muslims were converted. ठीक है, to scheduled castes. तो इनका क्या है? The constitution challenge that in the present case was based on a historical data which established the no backwardness or oppression faced by. So basically इनका idea क्या है कि जो scheduled caste है, this is basically the Indian origin religions उनको ही दिया जाता है. So Christians and Muslims, they generally do not have faced such oppression in the past. So this reservation is being done to undo the wrongs, historical wrongs, the oppression that has been done for quite some time. Okay. It only allowed Hindus to be classified as SCs and later amended it to include Sikhs in 1956 and Buddhists in 1990. So under SCs, only 3 categories of religions. We have Hindus, Sikhs and Buddhists. ठीक है, तो ये इसका आइडिया है. The center ने एक कमीशन भी एस्टैब्लिश किया था, headed by Chief Justice K.G. Balakrishnan, to examine the grant of SC to persons converted to religions other than the presidential order. Other than these 3, अगर किसी को मिलता है तो उसको रिव्यू करना है कि वो उसको ऐसी स्टेटस देना है कि नहीं है. ठीक है. The National Commission for Religious and Linguistic Minorities, headed by Chief Justice of India, erstwhile Chief Justice, not the present one. Present is Mr. Chandrachud. CJI Ranganath Mishra recommended complete delinking of religion from the classification. तो इन्होंने बोला कि ऐसा कोई क्लॉज नहीं होना चाहिए कि SC/ST रिजर्वेशन से रिलेटेड आप रिलीजन का क्लॉज इन्वोक मत कीजिए. Then we have the Sachar Committee report, which examined the socio-economic position of Indian Muslims. It gave a very Sachar Committee has been landmark in assessing the position of Muslims in the country, their socio-economic conditions, their backwardness, their educational backwardness, other areas of their disempowerment. So that it observed that the situation of Dalit Muslims did not improve after conversion. So they recommended that they also should be included under the ambit. Okay? The report placed Muslims below SCs and STs in backwardness. तो ये सचर कमेटी की रिपोर्ट ने बोला है कि SC/ST से भी बैकवर्ड है, तो इनको आप रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे हैं. ठीक है. Now we have this report, World Happiness Report. World Happiness Report. This network gives it UN का SDSN network, Sustainable Development Solutions Network. ठीक है. तो इसमें लगातार for the 6th year, Finland was the world's happiest country, and India, as we all know, has been reeling under a lot of problems. So its rank is quite below, quite towards the lower end of the spectrum, 126 of 137, and Finland tops it. Finland topped the ranking given by UNSDSN network, ranking the world's most happiest countries. Moving on, what is AT1 bond? What is AT1 bond? So sometimes they are known as contingent convertible bonds. Just remember this. It's a type of a debt instrument issued by a bank that can be converted into equity if its capital levels fall below certain requirements. ठीक है. तो equity में इसको convert कर दिया जाता है. ठीक है. Equity means which is more liquid asset. It introduced after the global financial crisis. 2007-8 के बाद जब आपको पता है वो crisis हुआ था, the subprime crisis of the United States, bubble burst हुआ था. India also had a lot of impact. Many people lost jobs and the market also crashed. So banks were asked to operate using their own permanent capital. जो उनका अपना capital है ना, the reserve capital, as opposed to borrowed capital. ठीक है. This permanent capital term is tier 1 capital. So we have tier 1 and tier 2 capital. So tier 1 capital is something that is bank's own reserves. So it recommended using that. AT1 bonds, like other bonds, pay regular interest. Okay? But they do not have a maturity date, as they are permanent part of bank's capital akin to equity. So it's not something that that is going to mature at a certain date. It is you will get interest by investing in these bonds, but they are bonds in perpetuity. They stay as long as they are not delisted. Okay?
81 bonds are the riskiest bond, as the issuing bank can skip the premium and interest payout if it's falling short of capital. तो इसमें आपको ये नहीं है, आपको guaranteed नहीं है, guaranteed आपको interest नहीं मिलना इसमें. So this is just a total under the control of the incumbent bank. ठीक है? Now what is CVEDA? CVEDA. It is a India-UK project jointly funded by ICMR, Indian Council of Medical Research, and UK's Newton Grant for Medical Research Council. Objective क्या है इसका? If environmental and genetic risk factors in industrialized countries and emerging societies distinctly shape brain function. But just remember this project. CVEDA, Indo, ICMR, और आपका MRC of Britain. So this is about environmental factors, genetic factors, how they influence brain functions. So it's about that. Terminator zone. What is terminator zone? So astronomers from California, इन्होंने क्या find किया है? Extraterrestrial life in far off exoplanets. ठीक है? Exoplanets जो हमारे solar system के बाहर वाले planets होते हैं. So that is known as terminator zone. Special zone है वहाँ पे. So they have assumed, they have kind of expressed a possibility कि वहाँ पे life हो सकती है. ठीक है? Terminator or twilight zone is a moving line that divides daylit side and dark night side of the planetary body. ठीक है? For example, in India, in our planet also, our planet Earth also, half of the globe is under the night darkness and half of it is lit. So that line that defines the differentiating perimeter that defines, that is the terminator or twilight zone, where there is a transition between light and day, night and day. Okay. So one side is always facing a star, that is light, and other side is always dark. It could just in just right temperature zone between too hot and too cold. Temperature terminator zone can retain liquid. अभी हमने मून के बारे में भी देखा था कि मून के साउथ पोल में ही ज्यादा हम क्यों अभी लैंडिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी क्या है कि थोड़ा शैडो जोन है, तो वाटर के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वहां पे, ट्रेसेस ऑफ वाटर में भी, बिकॉज इवेपोरेशन नहीं होगा ज्यादा, तो वहां पे इधर भी क्या है, terminator zone be neither too hot neither too cold, so it will be kind of able to retain some liquid water as well. Okay. Next is Hasdeo forest. So Hasdeo forest कहाँ पे है? Called as the lungs of छत्तीसगढ़. ये याद रखें, ठीक है? ये सेंट्रल इंडिया में कहाँ पे? अब नेक्स्ट आपका आ गया लेमरू एलिफेंट रिजर्व. Where is this? कोरबा district of छत्तीसगढ़. ठीक है? Government notified the reserve under section 36 of WLPA. So all the recognition of wildlife sanctuaries, you know, all these tiger reserves, this is under the WLPA, Wildlife Protection Act 1972, which has we learned in the previous lectures. उसके schedules हटा के 6 से 4 कर दिए गए हैं. तो बस हसदियो पढ़ लीजिए. हसदियो, मांडीप, these are tributaries of one of the rivers. Tell me which river tributaries? हसदियो, मांड एंड इब, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं आप बताएं मुझे. और लेमरू ये कहाँ पे है? कोरबा छत्तीसगढ़. ओके. फिर हमने देखा है लोकटाक लेक. लोकटाक लेक कहाँ पे है? हमने पढ़ा है मणिपुर में है. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं इसको, यहाँ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है. कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जहां पे आपको यू विल गेट फुमडीज. फुमडीज आर लाइक फ्लोटिंग प्लैंक्टन्स और एल्गी व्हिच काइंड ऑफ फॉर्म, वहां पे फिर रिवरीन आइलैंड बन जाते हैं. जहां पे आपको सांगाई डियर भी मिलती है. सांगाई डियर आल्सो नोन एज बार्किंग डियर. ठीक है. तो नोन फॉर फ्लोटिंग सर्कुलर स्वैम्प्स कॉल्ड एज फुमडीज. ठीक है, लोकल. तो यहाँ पे ये भी है आपका. ठीक है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है. फिर ब्रो एंटलियर डियर जो हमने बोला अभी, ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का. ठीक है, जहाँ पे अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है. और लोकटाक वाज इनिशियली डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन. ठीक है, रामसर कन्वेंशन, इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं वो भी देखो आप. ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में इसको लिस्ट किया गया था 1993 में.
ठीक है, महानदी, वंडरफुल, इट्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, मोनिका, वंडरफुल. लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, दैट आल्सो आई वुड लाइक टू नो. Then section 354(5) of Criminal Procedure Code of Criminal Procedure CRPC mandates a person sentenced to death shall be hanged by the neck till he is dead. So this is section 354. Bachchan Singh versus State of Punjab. Note this case for your essay paper, your GS2 paper of the UPSC Civil Service Examination, and you can quote in your essay for the IB, for the CAPF paper. All these people, this case will be important. Bachchan Singh versus the State of Punjab. 75 Ramsar Sex, left bank. Wonderful, wonderful. Bachchan Singh versus State of Punjab, which upheld the death penalty but limited it to rarest of the rare cases. So rare death penalty ka India mein kya hai? It is given only in the rarest of the rare cases. So remember this, Bachchan Singh case upheld the death penalty but restricted it to rarest of the rare cases. Then you have Deen Dayal versus Union of India and others. It upheld that a method by ruling that hanging is as painless as possible and causes no greater pain than any other method. तो इस केस में अगर आपको कैपिटल पनिशमेंट पे कोई सवाल आता है, अगर आपका ऑप्शनल यूपीएससी के एग्जाम में सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, उसमें कैपिटल पनिशमेंट का अगर सवाल पूछा जाता है आपसे, तो उसमें ये आप कोट कर सकते हैं कि इन दीन दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, पेनलेस, ये जो आपका हैंगिंग बाय डेथ है, दिस इज द लीस्ट पेनफुल प्रोसीजर्स ऑफ ऑल नोन प्रोसीजर्स. दिस यू कैन कोट है. ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट. ठीक है, पार्टनरशिप्स एंड कोऑपरेशन फॉर वाटर, इसकी ये रिपोर्ट का ये टाइटल था. ठीक है, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस, करंटली मतलब ये मार्च का करंट अफेयर है, तब मार्च में हो रही होगी न्यूयॉर्क में. ठीक है, WWDR वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनेस्को ऑन बिहाफ ऑफ यूएन वाटर, ठीक है, एंड इट्स प्रोडक्शन इज कोऑर्डिनेटेड बाय यूनेस्को वाटर असेसमेंट प्रोग्राम. तो बस ये याद रखें हम. ठीक है, किसने ये रिपोर्ट दी है और इसका क्या स्टेटस है. ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान ने लेके आई है राजस्थान सरकार, मेकिंग इट द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट टू लेजिस्लेट ऑन द राइट टू हेल्थ. तो पहली स्टेट है, फर्स्ट स्टेट. तो ये क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे कि ट्रिविया में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस राइट टू हेल्थ. तो कौन सी स्टेट है भाई? पधारो महारे देश राजस्थान. Okay, so the bill provides mandatory free of cost emergency treatment for every resident of the state at both government and private hospitals. ठीक है, तो ये इसका अब कितना ये implement हो पाएगा private hospitals में, that remains to be seen, but the intent is correct. It mandates hospitals provide treatment in emergency cases without waiting for medico-legal formalities, the filing of the police complaint and all those things. Just get along with treating the personnel so that their life is saved. Give medicines, transport facilities without charging money. So the emergency ambulance services should not charge any money. You should give them first aid so that their life is kind of saved. Okay? So right to life under Article 21. Right to life becomes a part of Article 21, included RTH. Okay? Right to health, in which Supreme Court बंदुआ मुक्ति मोर्चा केस था. ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि राइट टू लाइफ becomes an integral part, right to health becomes an integral part of right to live. ठीक है, when you have the right to live, if you don't have the right to good health, right to access to these healthcare opportunities, that right to live is as good as sham. So that is about it. Okay, so next we have Zealandia. It is what is Zealandia? So scientists ने confirm किया है एक continent की existence का, जिसका नाम इन्होंने Zealandia दिया है, which is approximately 1.89 square miles. ये information important नहीं है, जो part of Gondwana land. अब आपको अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी का आइडिया रहेगा, जो हमारा जो टोटल कॉन्टिनेंटल मास था, ठीक है,
वो एक पेंजिया की तरह था, पेंजिया था, और इसके आगे पीछे देयर वाज अ ग्रेट ओशन पैंथलासा। ठीक है, ये ओशन था, साइड ओशन था, आगे पीछे ओशन था पूरा, और बीच में आपका ये जो आइलैंड, पूरा जो कॉन्टिनेंट मार्स था सारा इकट्ठा था। ठीक है, ये 200 मिलियन ईयर पहले, 200 मिलियन ईयर्स अगो, ये ना ब्रेकअप होना शुरू हुआ, दूर दूर जैसे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बन गए। ठीक है, तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट था, ठीक है, वो था लॉरेशिया, और जो सदर्न पार्ट था उसको कहते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में हम यहाँ जा नहीं सकते, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये जो आपका जीलैंडिया है ना, साइंटिस्ट ने बोला है कि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जो सदर्न कंपोनेंट था। ठीक है, तो इट्स अ लॉन्ग नैरो माइक्रो कॉन्टिनेंट, मोस्टली सबमर्ज्ड है अभी ये साउथ पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन की लोकेशन आप थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, कहाँ पे है? पार्ट ऑफ जीलैंडिया विच इज अबव वाटर फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ न्यूजीलैंड नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स एज वेल एज न्यू कैलिडोनिया। तो इसका टोटली ये मैक्सिमम ये जीलैंडिया सबमर्ज्ड है, इट इज सबमर्ज्ड। ठीक है, बट इसका थोड़ा सा पार्ट है जो, वो इसका जो समझ कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, दैट फॉर्म्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, इट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय डचमैन एंड सेलर एबल टैस्मैन। आपका टैस्मैन सी, टैस्मानियन, ट्रांस टैस्मानियन नेबल्स कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। तो अगर आपको ये ट्रिविया अगर कहीं पे, यू शुड नो इट, कि जो टैस्मैन सी है वहां पे, वो किसके नाम पे? एबल टैस्मैन, ही वाज अ डच बिजनेसमैन who was on a mission to find a great southern continent of Terra Australis। ये फाउंड करने गया था, इसको जीलैंडिया का पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। व्हाट इज दिस? सेकेंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर prosperity negotiating round happened in which place? अब IPEF2 कहाँ हुआ? ये हुआ इंडोनेशिया, बाली। ठीक है, ये यूएस लेड इनिशिएटिव है दैट एम्स टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप अमंग कंट्रीज। सो ओवरऑल एक कोलैबोरेशन बनाना है इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रीज के लिए, इकोनॉमिक रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, 2021 में लॉन्च हुआ था विद अ डजन इनिशियल पार्टनर्स, 12 मेंबर थे इनिशियली, टुगेदर रिप्रेजेंटिंग 40% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। ठीक है, IPF is not a FTA, free trade agreement नहीं है ये, but allows members to negotiate the parts. So the thing is, ये complete free trade agreement नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, दोनों कंट्रीज, जो अगर दो कंट्रीज के बीच में साइन होता है, तो वो एक आपस में एक उनका मतलब एक म्यूचुअल कंसेशंस मिलती है। यहाँ पे क्या है, ब्लैंकेट कंसेशंस नहीं मिलेंगी इसमें। the partners, for example India or the US, they can decide, okay, in these aspects we will allow concessions to both the parties, both India and US. So it is a selective FTA, you can call. एशिया का लार्जेस्ट 4 मिलीमीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। सो दिस, ये इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्वेश्चन ट्रिविया में पूछा जा सकता है, IB में, CAPF में, UPSC में भी शायद पूछा जा सकेगा ये। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड एशिया का लार्जेस्ट 4 मिलीमीटर टेलीस्कोप। कहाँ पे? देवस्थल। देवस्थल कहाँ पे? उत्तराखंड। ठीक है, देवस्थल में इसको they have found it, they have kind of inaugurated it. देवस्थल इन उत्तराखंड। ठीक है, किसने यहाँ बनाया है? who is the, which is the organization, which is the body? एरीज। ठीक है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टडीज, एरीज फाउंडेड दिस LMT इन देवस्थल उत्तराखंड। ठीक है, क्या करता है? 4 मिलीमीटर का डायमीटर रोटेटिंग मिरर होगा इसका। 4 मिलीमीटर का मतलब जो डायमीटर होगा मिरर का, मेड अप ऑफ अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड मर्करी, लिक्विड मर्करी से बना रहेगा, एंड कलेक्ट फोकस, लाइट को फोकस करेगा। इट इज द फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर astronomical observation. It has the largest aperture available in the telescopes in India, and it is the first optical survey telescope in India. इतनी इंफॉर्मेशन ही चाहिए आपको, आपको बस इतना याद रहेगा तो ये भी काफी है कि एरीज ने बनाया, देवस्थल में लोकेटेड है, और 4 मिलीमीटर एशिया का लार्जेस्ट है। ठीक है, सिरमिक रेडोम
Technology. What is this? Carborundum Universal Limited, a private company, signed an agreement with the DRDO for the manufacture of ceramic radomes using aerospace missile system. So these are certain components used in the aerospace technology, missile technology. They are structures or enclosures designed to protect an antenna. Antenna को एक coating kind of you can say, and जो electronic components हैं तो उनको बारिश से और UV light से बचाते हैं. होते क्या है ये? State of the art technology for shielding missiles across the world from getting overheated. तो एक तो बारिश से UV light से बचाएंगे और overheating से बचाएंगे. ठीक है? These are ceramic radomes. They have been developed indigenously by Research Center RCI, Research Center Imarat, which has developed India's missile arsenal. ठीक है? Clear है यहाँ तक कोई doubt? Any doubts? No, sir. Clear हो रहा है ना सब? मतलब we're try to remember the main although पढ़ना आपको सारा है, but exam perspective से जब आप थोड़ा सा उसको याद करेंगे तो आपको ये भी मैं साथ में बता रहा हूँ कि आपको याद क्या करना है. जो trivial facts हैं, जो information है, data है, वो आपको थोड़ा रिमाइंड रखना है माइंड में. Good afternoon, sir. I have a doubt. Yeah, please go ahead. Sir, with respect to this capital punishment, like why is capital punishment required? Like why give death penalty to anybody? Like why can we just not give him the what do we call it? Like full-time, lifetime imprisonment? Why give the capital punishment? See, there has been a lot of debate regarding capital punishment. Right now, only few countries, including India, they give capital punishment. So for understanding this, we'll have to go into the philosophy of punishment as such. So the idea of punishment is reformation. So there are three types of theories: retributive theory, reformative theory, and corrective theory, that kind of thing. So the reformative theory aims at, reforming the individual. So those people who can be reformed, they are given punishment. And for example, when we talk about the capital punishment, it is one of the, what you say, in Indian context parlance, because it is given the rarest of the rare case. Rarest of the rare when we feel that such kind of individuals cannot be reformed or they have caused grave damage. For example, if you talk about those Nirbhaya rapists, so that came under the extreme circumstances, the kind of absolute brutality. Okay, and about the 26/11 attacks we talk about, usme Ajmal Kasab, so that was an activity of national security. That was a breach of national security. So in these cases, the state has reformed to set an exemplary punishment so that it sends a message also. Although different studies have proven that it does not have that kind of impact, because those hardened criminals, they will commit crimes irrespective. There is this theory जो आप कहते हैं ना retributive punishment, जिसमें ज्यादा होती है. तो उसका एक logic है कि it is not punishing you for stealing the sheep. The idea is not to punish you for stealing the sheep. The idea is in future the sheep may not be stolen. ठीक है? तो ये एक एग्जाम्पल सेट करना है दूसरे लोगों के लिए. आपने शीप चोरी करी, आपने बकरियां चोरी करी, उसके लिए आपको सजा नहीं दी जा रही है. आपको इसलिए सजा दी जा रही है कि फ्यूचर में कोई बकरियां चोरी ना करें. So that is the idea. Lot of debate goes around. We can talk hours and hours in length on this topic because this is a really interesting one. But idea वही है कि capital punishment का कि you have to ensure कि मतलब उसका result आए, उससे हम वो जो future जो wrongs हैं वो control कर सके. But having said that, multiple life sentences, they are also given in certain cases. But in certain extreme of the extreme cases, rarest of the rare cases, we do resort to these things. And that's about it. Can't help it. Although they may not have that kind of impact, but sometimes we need to set an example as well. So in that regard. Got some idea here? Right, sir. Yes, got it. So, sir, like there is no right to life or such fundamental rights to
these people at the time of capital punishment or such. Yeah, when you they all they can do is give a mercy petition to the president, honorable president. So the procedure is like from lower courts, if someone has been convicted and given a death sentence, he can move the High Court and then the Supreme Court. If the Supreme Court upholds that punishment, your last refuge is the Honorable President of India, His Excellency. So that is your only refuge. Otherwise, once you have been sentenced, I think your right to live with dignity still remains, that you should be given those jo inmates ke rights, and you have those rights, but you cannot claim that I may not be executed because that has been the award of the honorable court. So that is about it. Right, got it, sir. Thank you. Yeah. Shall we move ahead? ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो ये डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया है कि अपनी कंट्री में जो इंपोर्ट्स आते हैं फॉरेन कंट्री से, तो वहां पे दे हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं तो वो ना आए, उन पे टैक्स लगा रहे हैं। तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस माना जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि उनके जो इंपोर्ट्स पे एक इनडायरेक्ट ड्यूटी लगा रहे हो आप। तो देखते हैं इसको। इट इज अ टैक्स that imposes importers and non-EU manufacturers to pay for the carbon emission. For example, India में एक कुछ product electronic item produce हुआ है, it produce certain carbon 100 units of carbon emission उसका produce हुआ, some let's take it. तो अगर वो EU limit से ज़्यादा है तो उस पे tax लगेगा। So under the political agreement, CBAM will enter into force in the transition पे, ये तो चलो छोड़ो, ठीक है। तो बस इतना समझ लो कि ये आपके जो भी EU कंट्रीज में शेंजन रजीम है, आपको पता है, तो पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है, तो उसमें कोई भी इंपोर्ट्स आते हैं तो उनका कार्बन एमिशन देखा जाएगा। इफ इट इज बियॉन्ड द EU लिमिट्स दे विल इंपोज अ टैक्स। यूएस ने भी इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट अलो किया था, जिसमें यूएस allows UN to join with or mirror EU's plan to impose carbon fee। तो यूएस ने भी एक कार्बन फी लगाने की बात की थी, बट डेवलपिंग कंट्रीज आर सेइंग दैट इट इज डिस्क्रिमिनेटरी बिकॉज 1750 में आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1750s में, तो टिल 2100, ठीक है, 2000 आपने पिछले 250 साल तक पूरा कार्बन एमिशन किया फ्रीली, आपको वो जेस्टेशन पीरियड मिल गया, you got that time to amp up your industrial production, your economy, everything, and now you are kind of, why should we pay for your destruction of the carbon space? That's the debate that's going on. So it goes on like that only. Anyways, next is Green Tug Transition Program. The Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, okay, announced the launch of Green Tug Transition Program. Aim of making India a global hub for green shipbuilding, ठीक है। अब हम सारा ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ पूरी दुनिया भाग रही है। 2030 तक हमने इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है ग्रीन शिप बिल्डिंग के लिए। द प्रोग्राम विल स्टार्ट विद green hybrid tugs, which will be powered by green hybrid propulsion systems, which consist of what? Methanol, ammonia, and hydrogen. Just get this. What are tugs? Tugs क्या होते हैं? Special boats that assist other vessels into and out of the port. But remember this, primary purpose क्या है? Help move larger boats by towing, pushing, or guiding them. ठीक है? India's first National Center for Excellence in Green Port and Shipping कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? गुरुग्राम, हरियाणा में। ये थोड़ा सा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको गलत मार्क करोगे कि आप सोचोगे हरियाणा में तो पोर्ट है नहीं, यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस कैसे बिल्ड हो गया। तो ये आपको बस याद रखना है। तो कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड टेरी, ठीक है, ये इसकी नोडल एजेंसी होगी। NONCOEGPS प्लस टेरी। इनिशिएटिव किसका है? टेरी का, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स प्लस टेरी। ओके, तो हम करंट अफेयर्स की क्लास हम यही क्लोज करते हैं बिकॉज वी हैव टू डू जीएस ऑल्सो। तो आप सब लोग आज जो करंट अफेयर्स वाले भी हैं, आप जीएस की क्लास ज्वाइन कर लें।
देख लीजिए कैसा लगता है आपको। नो वरीज, आप ज्वाइन करें आराम से। जिन्होंने पेमेंट नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन करें बस। ठीक है, तो हम कितनी देर में, यू टेक अ ब्रेक, 15-20 मिनट में वी विल रिकन्वीन, यू विल गेट अ मैसेज इन द ग्रुप। ठीक है, एंड ऑल्सो आप एक काम करें, वो अपने आंसर्स अभी ग्रुप में डाल दें, या इफ नॉट कंफर्टेबल इंडिविजुअली टेलीग्राम पे भेज दें, because I want you to give those answers. Don't correct them later and send it in the evening. I want them now. जो अगले 15 मिनट में नहीं आएंगे मैं उनको नहीं चेक करूंगा, तो भेज दो अभी। ठीक है, we'll convene after 15-20 minutes. We'll start a GS class. Okay? अभी डाउट्स है तो, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, 15-20 मिनट में